multiple methods to get confused to yourself. What I'm telling is you just try to adopt to one method, the method whichever convenient, the method whichever you are convenient with, you try to follow that. See here. So let me share the screen. See what I told here. So हाँ, आपको ये मिला है ना दिशा जी, आपको ये मिला है. देखो अगर ये x के जगह में फिर से हमको इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे को जो आंसर है वो मिल जाएगा. ठीक है, समझ रहे ना, समझ रहे हैं. सो हाउ डिड वी सॉल्व हियर, लुक एट दिस हियर, वी सॉल्व लाइक दैट ओनली. वेयर इज दैट, हाँ ये देखो मैंने डिफरेंशिएशन x वैल्यू फाइंड आउट करा, x वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद उसमें सब्स्टिट्यूट किया, मुझे मिला है. सेम वे यू जस्ट सेम तरीके से यहाँ पे भी सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा. ठीक है, ये साफ साफ मिल जाएगा. एंड हमारे को ये क्या बोलता है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं क्या बोलते हैं फॉलो नहीं करना चाहिए. आई वुड सजेस्ट यू टू फॉलो दिस मेथड गाइस. I would suggest you to follow this one. Look at this. If a is less than 0 guys, maximum value होता है ये होता है, and minimum value का भी फॉर्मूला यही होता है. If a is greater than 0 है, extreme value क्या होता है, तब minimum value होता है. And if a is less than 0 तभी भी यही फॉर्मूला होता है. समझ रहे हैं, हम दोनों दो कंडीशंस देखना है. We have to look upon two conditions. What are they? First, a is greater than 0, whether a is greater than 0 or not, whether a is less than 0 or not. If a is greater than 0, what is my extreme value? Minimum value. आ रहा है समझ. If a is greater than 0 guys, extreme value का मतलब होता है, if extreme value means it could be minimum or maximum value, it could be anything, right? In first question what he asked, he asked about to find extreme value. Extreme का मतलब होता है, extreme value मतलब it could be a minimum or maximum, but we have to understand that in a given question there was a value, a was less than 0, right? A was greater than 0, not less than 0. A was greater than 0. Whenever we are having a value is greater than 0, the value is going to be what? Extreme value is going to be minimum value. What is the formula for finding minimum value? This is my minimum value formula. Understand? 4ac minus b square by 4a. इधर भी देखो 4ac minus b square by 4a. अगर ये लेस देन 0 है तो ये होता है हमारा मैक्सिमम वैल्यू. मैंने आपको साफ साफ इधर आई विल टेल यू नाउ गाइस. If a is greater than 0, if a is greater than 0, a is less than 0. a is greater than 0 होता है वो मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला. मिनिमम वैल्यू is going to be what? 4ac minus b square by 4a. अगर ये greater than 0 है ये होता है मैक्सिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू इज गोइंग टू बी 4ac minus b square by 4a. साफ साफ अंडरस्टैंड. ये हमारा होता है फॉर्मूला. नोट बढ़िया से इसको डेकोरेशन करके लिख लीजिए. डेकोरेशन चमकी लगा के इसको डेकोरेशन कर लीजिए. ठीक है, समझ रहे हैं आपको, आ रहा है. मेकअप लगा लीजिए इसको एंड इसको चुप को माइंड में रख लीजिए प्लीज. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है. चलो हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट की तरह आ जाएंगे अभी. हाँ, so the answer is what here now? Second question option is correct. Third question, look at this here. Third question तो सब बनाना चाहिए, सब सिंपल सा क्वेश्चन है. 1 minus i divided by 1 plus i whole square. कैसा करेंगे इसको, कैसा बनाएंगे, कैसा भाई? सर a plus ib फॉर्मूला. a plus ib फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वो फॉर्मूला क्या होता है? What is the formula? Factorization. Can't I do factorization here? Yes sir. 1 minus i divided by 1 plus i. So 1 minus i into 1 minus i divided by 1. और यार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. देखो 1 plus i divided by 1 minus i, यही तो है ना फंक्शन. सो 1 minus i यहाँ पे, इधर 1 plus i, राइट. सो अंदर फैक्टराइज कर देंगे बस. डिवाइडेड बाई 1 plus i इंटू 1 minus i डिवाइडेड बाई 1 minus i, सो होल स्क्वायर. सो इधर देखो 1 minus i होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर. इसको करेंगे फिर से. देखो दिस इज थर्ड क्वेश्चन, राइट. लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन. हाँ, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, टेल मी. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, i स्क्वायर मतलब व्हाट इज द i स्क्वायर मींस -1.
minus 2 times of AB divided by 1 minus I square means minus 1. I square means minus 1. Minus 1 into minus 1 plus 1. So and whole square again. So what I'm going to get is this is going to cancel. So 2I divided by 2 divided by whole square. 2 will get cancelled. Minus I whole square. Minus I whole square का मतलब क्या होता है? माइनस स्क्वायर एंड आई स्क्वायर. ये माइनस स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, आई स्क्वायर तो माइनस हो जाएगा. सो आंसर -1 इज द आंसर. ऑप्शन देखो बेटा, ऑप्शन डी इज करेक्ट. समझा? कोई डाउट? एनी डाउट गाइस? सिंप्लीफिकेशन. एनी डाउट गाइस? नो सर. वेरी सिंपल गाइस. मैंने बोला था आपको बेसिक तरीका क्या है, इसको देखने से हमको पता चलना चाहिए कि फैक्टराइजेशन करना चाहिए. फैक्टराइजेशन करेंगे तो -1 मिल रहा है हमारे को आंसर साफ साफ. But guys, whenever you are writing squares here, you have to be so careful. 1 minus I into 1 minus I, 1 minus I whole square divided by a plus b to a minus b means a square minus b square I'm writing, and whole square. Don't forget to write this. So finally we are getting -1 is the answer. So third question, fourth question. Look at the fourth question. Guys, argand. When argand z is less than 0, then argand of minus z minus argand of z is what? Argand of z is less than 0, guys. Now what is the concept? How many of you guys have solved this? How many of you guys have solved this question? Tell me. अरे यार बताइए भाई आपको. How many of you have solved this question I'm taking? Hello, are you guys here? Am I speaking with Arvind ji, Abhinaya ji, Disha ji, Amrut ji? Are you guys are here? क्या हुआ भाई? Guys, अरे tell me whether you have solved that or not. No, sir. Hmm? No, sir. No. ये बताने में क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा था? प्रॉब्लम क्या हो रहा था? चलो ठीक है, हम लोग सॉल्व कर लेंगे. Sir, I solve it like this. So Okay, so look at this. Argand Ez is less than 0. Argand of look at this. Argand of Ez is less than 0 beta. Argand of minus Ez minus argand of Z is equal to what? This is what he is asking, right? So guys, look at this here. Let Z को लेता है R times of cos theta plus I times of sin theta, right? This is what, right? This is what is this? This is my polar form. I'm taking polar form, right? So E has given that argand of Z is less than 0. So argand of Z is equal to what? Argand of Z means what? Argand का मतलब क्या होता है? थीटा तो होता है, थीटा. तो थीटा का मतलब less than 0 है. Guys, he has given argand Z my is less than 0 means theta is less than 0. Argand मतलब थीटा ही होता है. Argand is an angle which makes an in anti-clockwise direction, right? मैंने बोला था आपको बेटा, ये होता है हमारा आर्गन. ये तो क्लॉकवाइज हो गया, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया. हमारा आर्गन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज आर्गन? आर्गन मींस मेकिंग एन एंगल व्हिच इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये हमारा होता है आर्गन. समझ रहा है? ये हमारा रियल एक्सिस हो गया, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस हो गया, एंड ईयर पॉइंट हो गया पी ऑफ एक्स का मोबाइल. इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो हम लोग इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? ये निकाल सकते हैं. समझ रहे हैं? तो मैंने बता रहा हूँ आपको आर्गन ऑफ इज क्या होता है? थीटा होता है. इधर थीटा इज लेस देन 0. साफ साफ. नाउ लुक एट दिस हियर. What he has given again, argand of minus z minus argand of z is what? हाँ, argand of z क्या दिया है? देखो बेटा अपने साफ साफ. very important point. This is what we have to find out, right? Listen to me carefully. How I'm going to write, how smart we are going to use. Look at this here. Is equal to what, right? So now let us say argand of
minus z minus argand of z is what we have to find out. So now look at this, try to understand this carefully. This from polar form what I'm writing, z can be written as minus z. I'm multiplying with minus on both sides, so minus r times of cos theta. I'm multiplying with minus on both sides. If I multiply, so what I'm getting, R of cos of pi plus theta. how? So because we are taking pi as an expansion. Tell me. Here guys, look at this, cos is positive, sin is positive. Guys, cos positive, this is my pi plus theta, this is pi plus pi minus theta, this is plus pi, this is minus pi, isn't it? यही तो पढ़े थे हम लोग, Yes, sir. थीटा माइनस थीटा. ये तो तो r cos theta is what now, pi plus theta plus I or sin pi plus theta, right? So this is r minus z, right? So argand of minus z is what now, Pi plus theta. pi plus theta. Why? Because argand of z क्या होता है, थीटा होता है. इधर थीटा की जगह में क्या हम लिख रहे हैं हम लोग. Guys, if you are not understanding that, look at this here, cos of 180 plus theta again cos theta, sin of 180 plus theta again sin theta, right? 180 plus साफ साफ पता चल रहा है भाई, 180 plus theta, cos of 180 plus theta cos theta only, sin of 180 plus theta again sin theta only. So what is theta here? Pi plus theta. समझा? So therefore argand of minus z is equal to, sorry, minus argand of z. So argand of minus z, what I got, pi plus theta. So substitute here pi plus theta. Argand of z was theta. Theta will get cancelled. Pi is the answer. How many of you understood this? Guys, look at this, guys. Argand of z ये क्या होता है, थीटा. मुझे तो पता है साफ साफ. Guys, this thing I know theta. Argand of z I know theta. Argand of z, what is the meaning of argand of z? Argand of z means theta only. So argand of z I will be substituting theta. We have to find out argand of minus z here. So how can I find out argand of minus z here? In terms of finding that, I must multiply with minus on both sides. If I multiply on both sides with a minus, so after multiplying with minus on both sides, I am applying argand again. Argand of minus z, and argand of this is what? Argand of this entire function. Argand of this entire thing is what? Argand of that entire thing is what, guys? Theta. What is theta here? Pi plus theta. So argand of minus z, I got this one. Minus z, I got pi plus theta. So substitute here, argand of z is, I got this. Argand of z is theta. Theta plus theta minus theta will get cancelled. Pi is the answer. So option A is correct. So fourth question, option A is correct. Guys, this is what the class is all about, guys. So I have next class right now. So thank you, and we'll discuss the, I'll be posting the results by tonight. And thank you for your listening, and please try to follow the class notes and go through every basics. Please, everyone, what I'm saying is go through the complex number notes and revise it once again, and come with the next class. Come for the next class after revising it. Thank you, and solve all quadratic equation exercise problems as well. Thank you, guys.